We are here today with our minds and hearts open to be guided and enlightened by your kind self, to help us all overcome these difficult times and come out positive and victorious with inner influence. But before that, we would take a few minutes to present the change of guard. As you all know, we would have loved to have a change of guard in person, but seeing the current scenario, we have had to revert to the virtual method, which was so brilliantly managed and taught by our immediate past chair, Dr. Aarti Gupta. Handing over the baton is a very emotional process where one passes the legacy to the next chair and to take the chapter to greater heights and build it stronger. I would now like to call upon our immediate past chair, Dr. Aarti Gupta, to pass on the baton to Kanika Vaid. ओम शांति। खुद पर हो विश्वास और खुदा में हो आस्था, फिर कितनी भी आ जाएं मुश्किलें, मिल ही जाता है रास्ता। A very good evening, everyone. These words by our esteemed guest, Sister Shivani, are so apt and encouraging as we all are going through some very tough times and trying to find the right path to walk on. Last 1 year, we at Flow Kanpur together nurtured the feisty feeling to dare to take the first step even when we could not see the whole staircase, and made sure that we not only empowered ourselves but those around us. I extend my deepest gratitude to all of you for that. As I pass on the baton to my incoming chairperson, Kanika Vaid, I'm sure you would support her with the same amount of love, understanding, and enthusiasm you all have given me. Kanika is an extremely dynamic person with a fantastic team. I am confident that with her humility, perseverance, and dedication, she will hitch her Kanpur flow wagon to the stars and take the chapter to greater heights. I feel extremely proud to hand over the reins to the team that helped us in our journey as we rise by lifting others. Handing this over to Kanika. I would like to end in the words of Mother Teresa. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the waters to create many ripples. I am sure this talented and extremely capable incoming team will create the much needed ripples. Heartiest congratulations and good luck to the team. I would now like to invite Flow Kanpur Chairperson 2021-22, Kanika Vaid, to share her team and vision. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Aarti, so much. Good afternoon. It's a great privilege for me to take on the responsibility of Chairperson Flow Kanpur 21-22. I'm extremely thankful to my Flow members and my past chairs for entrusting this responsibility on me. A special thanks to my immediate past chair, Dr. Aarti Gupta, for all her support. Henry Ford rightly said, coming together is a beginning, keeping together is a progress, working together is a success. Today is the start of a new adventure. There are new challenges to face, new memories to make, and new obstacles to overcome. Some of you have been a part of this organization since a long time, and some have joined recently. But one thing that is common between all of us is the will to do something, will to learn new things. Let us each come forward and take action, do more than we believe, dream what we can't achieve, and spread our positivity to a world which needs most during these times. My team and I have worked effortlessly to curate a number of educative as well as fun workshops to keep you busy throughout the year. Before we begin, I would like to take a moment to introduce you to my dynamic team and vision for the year 21-22. If everyone is moving forward, then success takes care of itself. I take great pride in introducing my team 2021-22. Extremely dynamic and enterprising, my immediate past chairperson, my mentor, Dr. Aarti Gupta, who has given me the courage to shoulder this responsibility. My senior vice chair, Pooja Gupta. Pooja is an innovator, a powerhouse of ideas,
and has the ability to conceptualize my dreams into reality. My Vice Chair, Sneha Gupta. Sneha effectively communicates my ideas to words and brings positivity to all our endeavors. My Treasurer, Meenu Jhunjhunwala. She is a creative head with eagle's eye for aesthetics. Meenu is my biggest strength and extremely meticulous. My Secretary, Shruti Jhunjhunwala. Shruti is my accountability partner and takes actions to accomplish all my goals. Kashish Agarwal, my Joint Treasurer. Simplicity and hard work are synonymous to Kashish. My executive team, Archana Khaitan, Anuradha Vashne, Alka Dalmia, Chandani Kanodia, Charu Ved, Deepa Agarwal, Jyoti Agarwal, Nalini Sanwal, Ritu Bhasin, Ritu Lord, Roli Gupta, Ronita Modi, Sheenu Khandelwal, Shikha Ved, Shivani Agarwal, Shubha Agarwal, and Tripti Shivhare. With this dynamic team ahead, I'm sure to achieve more than all that I desire. Now, I would like to present my vision for the year 2021-22. Team: trade, educate, activate, manage. The city of Kanpur has always been known as the Manchester of East and is recognized as one of the most important industrial hubs for the entire nation. Flow Kanpur will closely work with our National President's vision of industry, trade and innovation to ensure that we, with our vision of team, make significant contributions toward growth and sustainable development. To achieve our vision of trade, for the first time, we have tied up with FICCI UP to organize a trade fair in our city. We will work towards making the largest women's organization, FICCI Flow, a catalyst to promote the economic growth of our country in whole. Under our Educate series, we are planning to organize some educative workshops for our members to help them polish their skills further, with special focus on new age business. Under our Activate series, we're going to conduct some activities to help people ignite their minds and come up with innovative ideas. Under our Manage series, we will be organizing workshops to help women manage their assets and investments, improve their brand value, as well as motivate them to be positive, supportive, and focused. To commemorate the 75th anniversary of India's independence, we are planning to create awareness about our legacy and celebrate this joyous year under our one tagline of Azadi Ka Mahotsav. We are starting with a new story blogging series called Ek Pyali Chai or Thodi Si Story, which will bring back stories of unsung women heroes. Under our Ek Prayas banner, we will be doing workshops to generate livelihoods in our adopted villages and nearby. Cleanliness and menstrual hygiene are two topics close to my heart. We will organize awareness workshops for the same. As I truly believe, teamwork makes the dream work. With the support of my 250 plus members, I'm sure we can achieve all this. Thank you. Now, I would like to welcome globally acclaimed figure in spiritual and emotional empowerment, Sister B.K. Shivani, whose profound and practical wisdom has made millions of viewers think, understand, introspect, take positive steps forward, and experience self-transformation. The peace, love, and positivity that she embodies reflects in her messages, which she happily shares in all her platforms. And as Aarti rightly said, आपको बुलाना था तो हम लोगों को बुलाने का रास्ता मिल ही गया. It's a huge privilege for me as the chairperson of Flow Kanpur to host you today. It's a dream come true, sister. Balancing work from home, managing family life, and keeping healthy has become much more challenging. These things might leave us feeling helpless, but in reality, there are still a lot of things we have power over in our lives. And to direct
our energies towards these things, let's connect with our heart and soul with Sister Shivani. Om Shanti, sister. Om Shanti, and thank you so much. And first and foremost, congratulations to the entire family and the team which has started today with a vision and a clarity, and most important, a pure intention. When we come together, it's a pure intention to serve, to empower, to energize, to strengthen everybody, whether it is physically, financially, socially, emotionally. Very, very important, needed now is also to empower people emotionally. And so, like you beautifully said, that to manage work from home, to manage the family, to manage our work, to take care of our health, seems to have got a little tougher than before. But if we think about it, everything that we are going to manage, it's our whole list of responsibilities. So if you had to ever prepare a list of your responsibilities, कि मेरी जिम्मेवारियां क्या हैं, my responsibility, and start writing, and start writing, and start writing. And then when you complete the list, check if you've written your own name there. You would have written family, you would have written children, you would have written your work, you would have written flow. And would you write your own name there? You would even write your physical health, because that's also our responsibility to take care of our body. But would we write taking care of our mind as our responsibility, taking care of ourselves as our responsibility? Somehow it doesn't come on the responsibility list. And because it doesn't come on the list, it never comes in our task to be done. Because anyways, we're somewhere finding shortage of time to even complete everything that is on our responsibility list. Who is the one who takes care of my family? Who is the one who takes care of my work? Who is the one who's going to take care of all these projects of flow? Who is it? It is I. And who is the I? It is this mind. It is this mind which is going to do all this wonderful work. And we have so much more that we want to do. But who's going to do it? It's the I. If the I is not in the perfect health, then wouldn't everything else get affected? So draw a visual before you. The I is the seed. So we know where the seed is. The seed is under the ground, not visible. Not visible to the world, not visible to me. And from there comes out the tree. So the tree is my physical health, then my family, and then spread into the branches, my work, then flow, then my social activity. So many things are there in the tree of life. Why are we always short of time? Because we are very busy taking care of the tree of our life. And the tree of our life is expanding, and it's getting bigger and bigger and bigger. And there are more and more and more roles and responsibilities attached to it. Time is the same, 24 hours. So we always feel we are short of time. And इसलिए हर एक लाइन कहता है टाइम नहीं है जी, टाइम नहीं है. कोविड से पहले तो कहते थे मरने की भी फुर्सत नहीं है. क्या आप बोलते हो मेडिटेशन करना है? हाँ, मरने की फुर्सत नहीं है. And suddenly अब खाली बैठे हुए. But anyways, so that's the tree of life. If I have to strengthen this tree, if it should have healthy fruits and beautiful flowers, तो मुझे पानी कहाँ देना है? मुझे पानी कहाँ देना है उस ट्री को हेल्दी बनाने के लिए? और कितनी देर मुझे पानी देना है? मुझे बस 2 मिनट जाना है और उस पेड़ के बीज के उधर पानी देना है. It takes very little time. The seed is this much, but it's not visible. You see, the world cannot see the seed, but the world can see the tree, and I can see the tree. So हमारी सारी मेहनत किस पे जाती है? ट्री को सुंदर बनाने में चली जाती है. लेकिन हम कहते हैं सीड को किसने देखा है? मेरे मन को कौन देख रहा है? मैं क्या सोच रही हूँ, क्या फील कर रही हूँ? Nobody, because I know how to fake it. I can put a beautiful smile and nobody even know how my day has been inside. I could be crying in my mind right now and I can smile very beautifully and nobody is going to come to know. I could be hurt or upset here and I could be doing all my work beautifully and everybody is going to appreciate me for the excellent work that I do.
डजंट मैटर मन में क्या चल रहा था, किसको फर्क पड़ता है, कोई नहीं देखता। तो वो अंदर का जो दर्द है वो दबता ही जाता है, दबता ही जाता है, दबता ही जाता है, काम होते जाते हैं। यू नो द वर्क नेवर स्टॉप्स, इट ओनली गेट्स बिगर एंड बेटर एंड बेटर। काम होते जाते हैं, मन की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, मन की शक्ति को बढ़ाता नहीं है, काम और बढ़ाता रहता है। सो विदाउट एनर्जाइजिंग द सीड वी आर एक्सपेंडिंग व्हाट वी वांट टू डू। एंड देन हम ये सब कर ही रहे थे कि सडनली कोविड आ गया। अभी तो पिछले साल, इस साल वाला तो खैर एक अलग ही लेवल पर आ गया। लेकिन जैसे ही कोविड आया, हमने कहा फियर एंड एंजाइटी इज नॉर्मल। नाउ लेट्स थिंक, as an organization whose motto is the power to empower. So, when do we empower people? When there is a situation, when people are going through a low phase, our responsibility is to empower them, whether it's physically, financially, socially, or emotionally. Empower करना हमारा रोल है। लेकिन अगर हमने ही कह दिया fear and anxiety is normal, तो कैसे होगा? क्या होगा? वी गिव एवरीवन द परमिशन टू क्रिएट फियर एंड एंजाइटी। और जब हम एक दूसरे से बात भी करते थे, हम कहते डर तो लगेगा ही ना, चिंता तो लगेगी ना, क्या पता 2020 कैसा होगा। ऐसे करके हमने किसी तरह वो पिछला साल बिता ही दिया। एंड जिस दिन 31 दिसंबर 2020 आया, हमने कहा थैंक गॉड ये साल खत्म हो रहा है, ये साल तो बिल्कुल अच्छा नहीं था, अब तो सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। अभी हैप्पी न्यू ईयर, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। वेलकम 2021 विद सो मच लव एंड फेथ एंड होप। एंड देयर कम्स 2021 एंड आज हम कह रहे हैं इससे तो 2020 ही बेटर था, इतना ये सब नहीं हुआ था 2020 में जो 2021 में हो रहा है। सो सिचुएशंस आर अनप्रेडिक्टेबल। हमें नहीं पता है आगे क्या होने वाला है। एंड इट्स नॉट अबाउट कोविड, कोविड इज अ ग्लोबल सिचुएशन और अ नेशनल सिचुएशन टुडे। लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ में सिचुएशन तो कभी भी सामने आकर खड़ी हो जाती है। आई डोंट नो व्हाट्स इन स्टोर फॉर मी दिस ईयर, आई डोंट नो व्हाट्स इन स्टोर फॉर मी नेक्स्ट ईयर। हाँ, कभी कभी हम जाके कुछ लोगों से पूछ लेते हैं कि आपको क्या लगता है मेरा इस साल कैसा होने वाला है, और वो कुछ कुछ कैलकुलेशंस करके हमें बता सकते हैं कि इस साल आपका ये होगा या अच्छा होगा या नहीं अच्छा होगा। उनमें से भी कुछ प्रेडिक्शंस सही निकलती हैं, कुछ प्रेडिक्शंस नहीं सही निकलती है, बिकॉज देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट। सो लेट्स रिमेंबर वन थिंग एंड लेट्स फिट इट हियर। Life, if we look at it outside, has never been in our control and will not be in our control, which means situations are not in our control. It never was, but never will be. That's certain. So when we say uncertainty, it's only going to increase. ये कम नहीं होने वाली है, ये सिर्फ बढ़ने वाली है। But जब बाहर सब कुछ uncertain हो, तो सिर्फ एक चीज सर्टेन हो सकती है। And let's focus on only that one thing which can be certain when everything else is uncertain. आपको ये भी नहीं पता है कि आज शाम को आपका बच्चा आपसे के साथ किस तरह से बात करने वाला है। वो सडनली एक अलग तरह से बात कर सकता है। And you will sit in the corner of your room and you will say, I never ever thought my child can speak like this to me. मेरा बच्चा ऐसा भी बोल सकता है मेरे साथ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। So it's a situation which I was not prepared for. Leave alone COVID, I was not even prepared my child can come and talk to me like this. I was not even prepared that someone who I trusted completely could betray me. I'm not prepared. I'm not prepared that suddenly I do a blood test tomorrow and my blood test report shows me something. We're not prepared for outside situations and we never can be. हमें पता ही नहीं है सिचुएशन कौन सी होने वाली है, लेकिन सिचुएशन को फेस करने वाली शक्ति, who is the one who is going to face the situation, who is the one who is going to look for the solution in that situation, who is the one who is going to empower the entire family and the organization and the society in that situation, who is the one who's going to take charge and bring everyone out of the crisis, who is that one? It is here, the seed, the mind. So in every situation, if there is one thing which is needed to be perfect, it is actually first the mind. अगर हमारा मन परफेक्ट होगा ना, हम जीवन की बड़ी से बड़ी सिचुएशन से बाहर निकल कर आ सकते हैं।
लेकिन अगर हमारा मन ठीक नहीं होगा, हमारा मूड ठीक नहीं होगा, तो छोटी बातें भी बहुत बड़ी लगती हैं। बातों का साइज क्या होता है? आई एम श्योर यू ऑल सीन इट इन फैमिली। कोई बात आती है, वन फैमिली मेंबर से इतनी बड़ी बात आई है, सामने वाला कहता है छोटी सी बात है, फिर उस पर झगड़ा होता है, ये छोटी सी बात कैसे है? अरे छोटी सी तो बात है, तो तुमको छोटी सी बात लग रही है, इतनी बड़ी बात है, मालूम है इसका रिजल्ट क्या क्या होने वाला? कुछ नहीं होने वाला, छोटी सी बात है, खत्म हो जाएगी। सो नाउ इट्स डिफिकल्ट टू डिसाइड कि वो छोटी सी बात है या वो बहुत बड़ी बात है। हु विल डिसाइड? हु डिसाइड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिचुएशन? बिकॉज द सिचुएशन हैज नो साइज। सिचुएशन का कोई साइज नहीं है। The size of the situation is proportionate to the strength of the mind. हमारी इनफ पावर कितनी है? जैसे अगर अभी आपके पास एक टेबल पड़ी हुई है और आपको उस टेबल को उठाना है, आपके लिए हो सकता है वो बहुत भारी हो, आपका बेटा आकर उसको एक हाथ से उठा लेगा, आप कहोगे ओ मुझसे तो ये हिली भी नहीं, वो कहेगा इसमें क्या था, ये तो उठ गई, क्योंकि फिजिकल स्टैमिना इज डिफरेंट। सेम वे situations have no size, it depends on our emotional stamina. Let's stop saying कोविड ने ये क्या, कोविड ने ये क्या। हाँ उसने किया, लेकिन हमने अपनी शक्ति को कितना बढ़ाया उस सिचुएशन से फेस करने के लिए? हमने अपनी शक्ति को कितना बढ़ाया कि हमारे आसपास जो थे हम उनको भी स्ट्रेंथन करके इस सिचुएशन से बाहर निकाल कर आए? हमने अपनी शक्ति को कितना बढ़ाया कि अगर किसी को कोविड हुआ हमारे आसपास, हम यहाँ से बैठकर उनके लिए मेडिटेट करके उनको वाइब्रेशंस भेजकर उनको एम्पावर कर दें, इवन दो अपने कमरे में वो अकेले बैठे हुए हैं। दैट इज पावर टू एम्पावर. Power to empower also means to be able to empower somebody's mind. लेकिन अगर हमारी सोच क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे कैसे हो गया, अब देखो हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, जगह ही नहीं है, बेड भी नहीं है। You see, it is a reality, but by repeatedly thinking about it and repeatedly talking about it and repeatedly discussing it, we are only depleting the energy of our own mind, of people's minds, and of the environment. We should be talking about how to energize ourselves so that we will be able to cross this situation. बार बार जो चीज सही नहीं है उसको क्वेश्चन करने से और बार बार उसको सोचने से हमारी शक्ति घटती जाती है। जितना ये शक्ति घटती जाएगी उतना सिचुएशन बड़ी होती जाएगी, हम कमजोर होते जाएंगे। सो व्हाट इज द साइज ऑफ द सिचुएशन is in proportion to how powerful am I here. And the more I am powerful, the more I will be able to empower others. Empower कर कैसे सकते हैं without being powerful? So it's like a battery. If this battery is charged, then I will be able to charge other batteries. अगर आपका फोन चार्ज्ड है और किसी और का नहीं है, तो आप एकदम से कहते कोई बात नहीं, मेरा फोन ले लो, आप चार्ज कर लो मेरा फोन। इसी तरह किसी का मन कमजोर है, किसी का मन आज उदास है, निराश है, किसी के घर में बीमारी आई है, किसी ने शायद अपने फैमिली में किसी को खोया है, क्या आप कह सकते हैं आओ 5 मिनट मेरे पास बैठो, आपका मन ठीक हो जाएगा? इतना फेथ है अपने अंदर, इतना कॉन्फिडेंस है कि हम किसी को एम्पावर कर सकते हैं। एंड ये बहुत इजी है। बाकी सारी एम्पावरमेंट जो आप करते हैं ना, वो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप मुश्किल वाले काम बहुत अच्छे से करते हैं। इट रिक्वायर्स सो मच एफर्ट, सो मच टाइम, सो मच मनी, सो मच हार्ड वर्क, लेकिन हम वो सारी मेहनत करते हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ अच्छा सोचना, सही सोचना, पावरफुल सोचना और वो वाइब्रेशंस दूसरे तक पहुंच जाए और दूसरे का मन भी ठीक हो जाए, ये तो कितना इजी है। कोई भी कर सकता है, छोटा बच्चा भी कर सकता है, कहीं भी बैठा कर सकता है, किसी सिचुएशन में भी कर सकता है। लेकिन हमने आज क्या किया, जो बड़े वाले मुश्किल काम है उनको हमने इजी कर दिया, और जो छोटा सा काम है सही सोचना, उसको हमने कहा नहीं, सही इस समय अच्छा कैसे सोच सकता है कोई? लेकिन इस समय ही तो सबको शक्ति की जरूरत है ना, इस समय ही तो शक्ति की जरूरत है ना। You know, every thought we create is radiating to our body. Is this the time to radiate negative energy to the body?
लेकिन हमने कहा सोचते जा रहे हैं ना, सोच से क्या फर्क पड़ता है. दिस इज द सीड, द बॉडी इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्री. सो जैसी क्वालिटी ऑफ सीड होगी वैसी क्वालिटी ऑफ ट्री बनती जाएगी. अगर हम सोचेंगे ओ इनको भी हो गया, इनको भी हो गया, इनके तो पूरे परिवार को भी हो गया, मेरे नेक्स्ट डोर वाले बंगले में भी हो गया, मेरे ऊपर वाले फ्लैट में भी हो गया, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस ने कहना है मुझे भी हो सकता है. अगर मुझे हो गया तो अच्छा, मुझे हो गया तो मैं झेल लूंगा, लेकिन मेरे पूरे परिवार. तो हमारा माइंड तो कहाँ का कहाँ क्या क्या सोच जाता है. एंड while we are creating all these thoughts, let's remember each thought is vibrating to my body. It's radiating to every cell of my body. लेकिन हम कहते ये तो सच है, तो हम बोलेंगे ही. जो सच है उसका ध्यान रखने वाले लोग दिन रात काम कर रहे हैं, है ना. ये उनका रोल है. सोचने से काम नहीं होते हैं. हमारा रोल है अच्छा सोचना, शक्तिशाली सोचना, और वो वाइब्रेशन सब तक पहुंचाना, ताकि जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं ना उनको भी शक्तियां मिल जाए, उनको भी शक्तियां मिल जाए. बचपन से सीखा था कि whenever there is a difficult situation, even simple thing like an exam, हम पहले घर में प्रे करके जाते करते थे ना. और हम अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को कहते थे प्लीज मेरे लिए प्रे करना, प्लीज मेरे लिए ब्लेसिंग करना. अब वो क्यों प्रे करें घर बैठ के, एग्जाम तो हमने देने जाना था. घर बैठे मम्मी पापा प्रे करें, बच्चा स्कूल जाए एग्जाम देने, इसका क्या कनेक्शन है दोनों बातों का. या आज आपके बच्चे एग्जाम देने जाएं और आप घर बैठे हैं और वो जाते जाते आपको बोलकर जाए मेरे लिए प्रे करना, हाँ मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, एंड आप फटाफट प्रे करने बैठेंगे. इसका कनेक्शन क्या है. यू आर प्रेइंग एट होम, दे आर इन द स्कूल गिविंग द एग्जाम. व्हाट्स द कनेक्शन. द कनेक्शन इज वाइब्रेशंस. जब आप घर में बैठ के प्रे करते हैं तो आपकी वो पावरफुल वाइब्रेशंस वो बच्चे के माइंड पर जाती हैं, वो बच्चे के माइंड को पीसफुल और काम बनाती है, वो उसकी कैपेसिटी को बढ़ाती है और वो अच्छे से परफॉर्म कर देता है. वो घर आके आपको बोलेगा आज पेपर डिफिकल्ट था, शुरू में मुझे लगा मुझे कुछ कुछ चीजें नहीं आ रही है, लेकिन फिर पता नहीं कैसे हुआ मुझे ये आंसर आने लग गया, मुझे ये आंसर आने लग गया, और फिर मैंने पूरा अच्छे से क्रॉस कर दिया. ये पता नहीं क्या कैसे हुआ, वो पता नहीं वो होता है कि वो मम्मी जो घर पे बैठकर अच्छी अच्छी वाइब्रेशन भेज रही होती है, परमात्मा को कह रही होती है मेरे बच्चे को शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो, उसका एग्जाम अच्छा हो जाए. It starts changing the mind of the child. This is the power to empower other people's minds. लेकिन अगर वही मम्मी घर पर बैठ के ये सोचे क्या होगा, हाय इसके एग्जाम का आज क्या होगा, बोलता तो है पढ़ा है लेकिन दिखा तो नहीं मुझे पूरे साल ठीक से, वो भी ये साल तो पूरा घर पे बैठा था कंप्यूटर पे, मालूम नहीं पढ़ रहा था कि कुछ और. अगर ये भी तो सोच सकते हैं ना, चॉइस है ना दोनों में से कौन सी सोचनी है, ये वाली बात सोचनी है या ये वाली बात सोचनी है. अब हम कहेंगे रियलिटी तो ये है कि वो ठीक से नहीं पढ़ा था, लेकिन जितना वो ठीक से नहीं पढ़ा था ना उतना ज्यादा हमें प्रे करने की जरूरत है, ताकि अब हमारी पावर उसको पावर देकर उसकी जो करंट कैपेसिटी है उससे ऊपर उसको लेकर आएगी. सेम इज एप्लीकेबल टू द करंट सिचुएशन. This is the time where you have to use your power to empower people and empower not just family, empower not just relatives and friends, empower unknown people. क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपकी जो वाइब्रेशन है वो कहाँ फैल रही है. सिर्फ ऐसे ही कहानियों में नहीं सुनते आए कि जब बारिश नहीं हुई थी तो पूरे गांव ने इकट्ठे मिलकर हवन किया, पूरे गांव ने इकट्ठे मिलकर पूजा की, प्रकृति पर जीत पाली. हाउ डज इट हैपन. These are not miracles. This is pure science, science of the power of the mind and vibrations. So don't you think this is the time to do that? This is the time to do that, where we are not just going to pray and meditate because वो तो सिर्फ 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा होता है. We are going to take care that 24 hours, our every thought is a high vibrational thought. Our every thought is a high vibrational thought. Why? Because your every thought is first creating your mental health.
कई लोगों को एंजाइटी हो गई पिछले साल के अंदर। क्यों हुई? सोच में डर आ गया था, चिंता आ गई थी। वो सिर्फ कोविड की नहीं थी, वो कोविड से पहले की स्थिति थी, और फिर कोविड आया तो इट वाज लाइक द लास्ट टिपिंग पॉइंट व्हिच ट्रिगर्ड अस. सो आवर एवरी थॉट influences our mental health. So that is my influence, the influence of my every thought. Second, my every thought influences my physical health. सारा दिन में हम approximately 60 to 70,000 thoughts create करते हैं. That is what medical science says. But 60 to 70,000 thoughts in normal condition. आराम वाला जो दिन होता है ना, उस दिन 60 to 70,000 thoughts होती हैं. उनकी क्वालिटी क्या है? Every thought is radiating to my body. सोचो, सिर्फ 5 मिनट के लिए अगर हमने बैठकर ये सोचा, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैंने इतनी मेहनत की और उन्होंने इतनी आसानी से बोल दिया ऐसे सबके सामने, ये भी कोई बोलने की बात थी? चलो कहना था तो मुझे अलग से लेके जाके कह देते, देखा भी नहीं, 4 लोग सामने खड़े थे और बोल दिया. एंड द माइंड स्टार्ट्स दैट इनर कॉन्वर्सेशन, और हम बोलना शुरू कर देते हैं. पता ही नहीं चलता कब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बीत जाते हैं. फिर हम अपना काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन द माइंड इज स्टिल टॉकिंग दैट सेम इनर कॉन्वर्सेशन ऑफ सम हर्ट, some rejection, some feeling disrespected, feeling insulted. And while we are creating all those thoughts, we are not even aware that all those thoughts are reaching to my body. वो मेरे शरीर पर पहुंच रही हैं. लेकिन हमने कहा उन्होंने किया ये ऐसा, तो थॉट्स तो ऐसी आएंगी. उन्होंने जो किया वो उधर किया, बाहर खड़े होकर किया. मैंने जो किया वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो वहां खड़े होकर कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन उनके वर्ड्स मेरी बॉडी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते थे. People's behavior, situations, they cannot have an influence on me. They are not the seed of my life. I have to remember, someone can stand here, they can abuse you, lie to you, shout at you, they can say whatever they want to you. आपकी हेल्थ पर कोई असर नहीं पड़ेगा उसका, because they cannot influence your mind and body. लेकिन when they do what they do, now how you start thinking about what they said, वो हर थॉट का इन्फ्लुएंस हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पर पड़ता जाएगा. एवरीथिंग. फिर वो जाएंगे, कोई और आएगा, फिर वो बात खत्म होगी, कोई और बात आएगी, और हम सोचते ही रहे. हमने ध्यान नहीं दिया हम कैसा सोच रहे थे, बिकॉज हमने एक छोटी सी गलती की. हमने अपनी सोच को सिचुएशन और लोगों की क्वालिटी पे डिपेंडेंट कर दिया. सो अगर सिचुएशन परफेक्ट थी, हम अच्छा सोच लेते थे. इफ पीपल वर बिहेविंग द राइट वे, हम अच्छा सोच लेते थे. कितना इजी अच्छा सोचना, व्हेन पीपल आर नाइस टू मी, व्हेन पीपल आर द वे आई वांट देम टू बी. लेकिन जब लोगों ने अच्छा बिहेव नहीं किया, जब लोगों ने सही तरह से काम नहीं किया, तो हम अच्छा कैसे सोच सकते हैं? दैट वाज द क्वेश्चन मार्क. क्योंकि मुझे बचपन में किसी ने नहीं सिखाया कि सोचना कैसे. उन्होंने मुझे ये सिखाया कि थैंक यू बोलो, प्लीज बोलो, सॉरी बोलो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे करो. सोचो, किसी ने नहीं सिखाया कैसे सोचना है. So I did not learn the art of thinking. When I did not learn the art of right thinking, I made my thoughts completely dependent on the situation. जैसी situation, वैसी मेरी सोच. So this made me emotionally dependent. Check करिएगा last time कब गुस्सा किया था. Just lay आइए on the screen of the mind the last time you reacted, you got a little irritated, a little angry. Just look, who was the reason? कोई ना कोई चेहरा आ जाएगा सामने, कहेंगे किया ही उन्होंने ऐसा था, गुस्सा तो आना ही था. And when I say that, I am disempowering my own self. I'm telling myself that I am powerless. उन्होंने बिहेव ही ऐसा किया था कि मुझे गुस्सा तो आना ही था. मतलब मेरी अपनी शक्ति कौन सी है फिर? मेरे मन का रिमोट कंट्रोल उनके पास है. And I am saying I have the power to empower others. Let's leave aside to empower others first. वो तो अपने आप ही हो जाता है. First of all, to take care
that I don't disempower myself. First, I have to empower myself. When I am empowered, automatically others are empowered by me. But I should not get disempowered. So, एक equation आज पक्की कीजिए. Situations and people do not create our thoughts and feelings. Nobody can get into my head and create my thoughts and feelings. I am the one who's creating them there. फिर भी हम कह देते हैं, उन्होंने गुस्सा दिला दिया, उन्होंने हर्ट कर दिया, उन्होंने इंसल्ट कर दिया, उन्होंने इरिटेट कर दिया. हम उनको ही इरिटेटिंग बोल देते हैं. कितने इरिटेटिंग लोग हैं. वो कहाँ से इरिटेटिंग है? वो कैसे इरिटेटिंग है? पावरफुल सोल्स ऐसे नहीं बोल सकते हैं. This is weak. This is a victim. A victim says, I have no choice. I am dependent on them. तो वो अगर अच्छे से बात करेंगे तो मैं खुश. वो अगर फोन करेंगे तो मैं खुश. वो अगर मुझे पूछेंगे तो मैं खुश. और वो नहीं करेंगे तो मेरा उदास होना नेचुरल है. This is a victim way of living. This is not a powerful way of living. And we definitely cannot be in that segment. So shift from blaming situations and people to taking responsibility. That's why responsibility में पहला नाम अपना ही आता है. Responsibility शब्द कोई देख लीजिए. Responsibility. Responsibility is responsibility. The ability to respond in every situation is my responsibility. That is my responsibility. कोई कुछ भी करके जाए, responsibility is my power. कि कैसे respond करना है. फिर सामने वाले कुछ भी कर ले, आपके पास पर्सनल गारंटी होगी कि मैं यहाँ नहीं हिलती. I am stable. I am calm. I am powerful because I am power. I am power. मुझे नहीं कोई हिला सकता. हाँ, मैं दूसरों के ऊपर अपने पावर की वाइब्रेशंस रेडिएट करके उनको एम्पावर कर सकती हूँ, लेकिन मैं उनकी वीकनेस को कैच नहीं करती हूँ. If I am at a lower vibration, then people's lower vibrations affect me. But if I am at a higher vibration, then people's lower vibration cannot affect me, but my higher vibration can empower them. तो हम कहाँ पर हैं? Anybody who's going to write the line, the power to empower for themselves, they cannot be at a lower vibration. क्योंकि अगर हम lower पे होंगे तो हमें तो कोई भी आके और low पे लेके चला जाएगा. We have to be here. Now, what is lower vibration? What is higher vibration? Stress, lower vibration. Lower vibration. Peace, higher vibration. अब आप दो columns एक दिन बना लीजिएगा. Lower vibration and higher vibration. Anger, lower vibration. Compassion and empathy, higher vibration. Expectations, जिसको दुनिया कहती है normal है. Expectations normal नहीं होती है. Expectation is lower vibration. दुनिया को कहना, please be my way so that I should be happy. This is lower vibration. Higher vibration, acceptance. Accepting people with dignity, who they are, how they are. Advising them, instructing them, but not allowing our mind to get affected because they are not my way. So acceptance is higher vibration. Complaining, शिकायत. कई बार शिकायत वाला संस्कार होता है. ये ठीक नहीं है, वो काम ठीक नहीं हुआ, ये सफाई ठीक नहीं हुई, आज खाना ठीक नहीं बना. हर चीज में कुछ ना कुछ शिकायत करने के लिए मिल ही जाता है. लोअर वाइब्रेशन. हायर वाइब्रेशन, शुक्राना. शुक्रिया, हर एक का शुक्रिया, हर एक का शुक्रिया. सुबह सुबह पहले अपने मन और शरीर का शुक्रिया, लोगों का शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया, एंड ऑफ कोर्स परमात्मा का शुक्रिया. So shukriya, shift from every lower vibration to a higher vibration. Criticism, critical and judgmental thinking, even if it's not in my words, it's just in my mind. ये ऐसे हैं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इनको. All my vibrations radiate to them. Lower vibration. Understanding people, appreciating and motivating them. Higher vibration. Comparing yourself with people. Comparing yourself with people, lower vibration. Self-respect, swaman, higher vibration. Competition,
कहीं ना कहीं किसी ने बचपन से ही सिखा दिया था कि लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन, एंड हम भी आगे अपने बच्चों को सिखाते रहते हैं लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन, लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन। किसके साथ कॉम्पिटिशन है? कहाँ है कॉम्पिटिशन? किसी ने कह दिया और हमने ऐसे ही सुन लिया और एक्सेप्ट कर लिया उसको। फिर कॉम्पिटिशन हमारा संस्कार बन जाता है। देन वी आर कंपीटिंग विद एवरीबडी। We can compete at work, we can compete at home, we can compete with siblings, we can compete at flow, we can compete everywhere. We can even compete in a festival, we can even compete in a puja, in a ritual. उनके घर में ऐसा था, मेरे घर में भी ऐसा होना चाहिए, नहीं तो वो क्या कहेंगे, इन्होंने ऐसी चीज यूज। We can compete anywhere and everywhere because competition becomes our sanskar. Competition is a lower vibrational energy. Higher vibrational energy, caring, sharing and cooperation. सब कुछ जो आता है वो दूसरों को सिखाओ, सब कुछ जो पता है वो दूसरों को बताओ, सब कुछ जो मालूम है वो सबके साथ शेयर कर दो। दैट इज हायर वाइब्रेशनल एनर्जी। सो इस तरह से बहुत सारे इमोशंस हैं, लेकिन हमें क्लियर होना चाहिए कौन सी लोअर है, कौन सी हायर है। एनीथिंग विच इज अ डिस्टर्बिंग एनर्जी, माइंड एंड बॉडी, लोअर है। एनर्जाइजिंग वाइब्रेशन हायर एनर्जी है। ये अलग बात है कि सोसाइटी इज कॉलिंग अ लॉट ऑफ लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज एज नॉर्मल, कि ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है। बट नॉर्मल बोल बोल के भी फिर लाइफ की क्वालिटी वैसी बन गई। 30 years पहले हम स्ट्रेस को नॉर्मल नहीं बोलते थे। इनफैक्ट स्ट्रेस कोई वर्ड ही नहीं था। इट वॉज नॉट एन इमोशन, इट वॉज जस्ट इन फिजिक्स, एंड इट वॉज स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाई रेजिलियंस, उतना ही था। प्रेशर्स होते हैं लाइफ में, लेकिन रेजिलियंस इज इनर पावर। इनर पावर, डिनोमिनेटर हर एक का डिफरेंट होता है, इवन अगर न्यूमरेटर हर एक का सेम हो। आज सबका न्यूमरेटर ऑलमोस्ट सेम है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। कुछ लोग हैं जो सुबह से रात तक हॉस्पिटल में खड़े हैं कोविड के बीच में, बिल्कुल उनके चारों तरफ कोविड ही कोविड है और वो सेवा कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं बंद, प्रोटेक्टेड, घर में हैं, लेकिन फिर भी डर लग रहा है। न्यूमरेटर डिफरेंट है लेकिन डिनोमिनेटर, सो इट्स द डिनोमिनेटर। सो ये सारी इमोशंस जो लोअर वाइब्रेशन है, फर्स्ट आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट नॉर्मल। नॉर्मल की डेफिनेशन को चेंज करना है। दिस इज एन इमोशनल इलनेस which gives rise to mental illnesses, physical illnesses, relationship conflicts, professional issues, and most important, the environment. It is these low vibrational emotional illnesses. If we become emotionally healthy, which means the seed becomes strong, सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, दुनिया बदल जाएगी। We don't need to wait for the world to change. We just need to nourish the seed. अब ये higher vibration energy create कैसे करें? किसी ने लिखा है रिएक्ट करें कैसे नहीं जब कोई बात होती है। इट रिक्वायर्स स्टैमिना, इमोशनल स्टैमिना। हम सब ने देखा है ये, कभी कभी किसी को 100 बुखार होता है तो भी वो बहुत हाय हाय करते हैं। उनको सिर्फ पूछ लो एक बार गलती से आपका क्या हाल है, उसके बाद शुरू हो जाए क्या बोलो तुमको, क्या कहो, ये भी दर्द हो रहा है, वो भी उठा ही नहीं जा रहा बेड से, ये सब वो बोलेंगे सिर्फ अगर हमने उनको पूछ लिया क्या हाल है। फॉर 100 फीवर। स्टैमिना, उनकी कोई गलती नहीं है, वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे हैं, उनको उतनी तकलीफ महसूस हो रही है बिकॉज उनका इमोशनल स्टैमिना लो है। और कोई और होगा जो लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर को क्रॉस कर रहा होगा, एंड आप उनके चेहरे को देखेंगे और आपको लगेगा इनके जितने खुश तो हम में से कोई और नहीं दिखाई दे रहे। हाउ कैन दे बी सो हैप्पी एट दिस स्टेज इन लाइफ? देयर इमोशनल स्टैमिना इज हाई इवन दो देयर फिजिकल बॉडी इज नॉट वेल। सो हमने रिस्पॉन्ड कैसे करना है? बाय रेजिंग आवर इमोशनल स्टैमिना, दैट इज द डिनोमिनेटर। प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस, दैट इज इनर पावर। हमें उसको बिल्ड करना है। कैसे बिल्ड करना है? फर्स्ट है, आज से सिचुएशन और लोगों को ब्लेम नहीं करना है। चाहे कितनी भी बड़ी सिचुएशन आ जाए, ये नहीं कहना उसकी वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है। आई एम द क्रिएटर, आई हैव द चॉइस हाउ टू थिंक, स्पीक एंड बिहेव। अगर कुछ गलत रिस्पॉन्स कर भी दिया कोई बात नहीं है, आई हैव टू सिट बैक एंड चेक हाउ आई कुड हैव रिस्पॉन्डेड। आई कैन नॉट इंडोर्स माई रिएक्शन एंड आई कैन नॉट ब्लेम एनीबडी फॉर माई रिएक्शन। Cannot.
cannot. There are people who remain very calm and very stable in the toughest situations of their life. 2 साल पहले, I met a lady, she had come from the US to Mount Abu. And she just said to me, she said, I don't know much about the Brahma Kumaris, but one day I was watching the program on TV and it was the first day I just saw and I said, chal theek hai, main dekh rahi hu. Fourth day, sirf 4 दिन. Fourth day, she saw an episode about how to be if someone dies. Agar there is a death in someone close to you, how to be. And she said the episode was, if I cry or if I get upset and if I am so troubled inside, then all my vibrations will reach to the soul who has left the body. समझ आ गया कि vibrations पहुंचती हैं to the soul who has entered the womb of a new mother. वहां पर vibrations पहुंचती हैं. Exactly 5 days later, her 21-year-old son left in an accident. And she said, and I was really surprised when I heard that from her because it was a reflection of the power of the human mind. And she said, मैंने फोन उठाया और मुझे जैसे ही ये पता चला, मैंने सुना और उसके बाद मेरी फर्स्ट थॉट थी कि ना मैं और ना कोई और मेरे बेटे को दर्द की वाइब्रेशन भेज सकता है. I am not going to allow anyone to send pain to my child. And she said, I got everyone together and I said, हम pray करेंगे, हम meditation करेंगे, लेकिन इस घर में कोई रोएगा नहीं, क्योंकि मैं अपने बच्चे को दर्द नहीं भेजने वाली हूँ. This is the power of the human mind. हमारे पास बहुत शक्ति है. हम बड़े से बड़ी सिचुएशन में भी बहुत काम रह सकते हैं. या हम छोटी सी बात पे, या आज मेरे फेसबुक पोस्ट पे किसी ने लाइक ही नहीं किया, उस पे भी उदास हो सकते हैं. क्या बात है, किसी को अच्छी नहीं लगी क्या आज मेरी फोटो, मैं चेंज करके देखूं, क्या हो सकता है फिर कोई उसको लाइक कर दे. सो इट्स ऑल अबाउट प्रपोर्शन, इट्स ऑल अबाउट स्टैमिना. तो सबसे पहली चीज, नॉट ब्लेमिंग सिचुएशंस एंड पीपल. सेकंड, बीइंग वेरी क्लियर व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट इज नॉट नॉर्मल. जब तक हम गलत इमोशंस को नॉर्मल बोलते रहेंगे, हम उनको चेंज करने की कोई मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनको नॉर्मल बोलकर विक्टिम बन जाते हैं. और हमारे आसपास के लोग भी बोलते हैं, उदास होना तो नॉर्मल है, बुरा लगना तो नॉर्मल है, इट्स अंडरस्टैंडेबल, आपको बुरा लगेगा इस टाइम पे. So we get wrong advice from people around us that time. So first 2 steps, no blaming. Second, clear definition of what is normal. Third, now start using the power of the thought. संकल्प से सिद्धि होती है. Thoughts manifest. So we have the power that as we think, so will start happening in our life. This is very, very logical. It happens. We all have experienced it, but unaware we have experienced it. Now we can consciously use it. कि जो हम सोचेंगे वो सिद्ध होगा. अगर आप एक ही क्वालिटी की सोच ले लीजिए और वो सोचते रहिए, वो मैनिफेस्ट होना ही होना है. अगर किसी ने 1 महीने के लिए सोच लिया कि मुझे ना कोविड हो जाए, मेरे घर में ना किसी को हो जाए, वैसे तो हम बाहर जा नहीं रहे, लेकिन वो कहते हैं हवा से भी आ जाता है, चल मैं खिड़की भी बंद कर दूं. मतलब सोचते ही गए, सोचते ही गए, सोचते ही गए. आप इतना ज्यादा उस थॉट को क्रिएट कर देंगे कि आप उस सिचुएशन को अपनी लाइफ में इनवाइट कर सकते हैं. दैट इज द पावर ऑफ द ह्यूमन माइंड. तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ हाउ वी थिंक, बिकॉज संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से सृष्टि बनती है. द वर्ल्ड गेट्स क्रिएटेड फ्रॉम द पावर ऑफ आवर थॉट्स. तो कुछ थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं, एंड यू कैन ऐड व्हाटएवर थॉट यू वांट टू ऐड टू दैट टू मैनिफेस्ट व्हाटएवर यू वांट इन योर डेस्टिनी. करंट टाइम्स की सिचुएशन के लिए फर्स्ट अफर्मेशन, आई एम अ पावरफुल बीइंग. मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, which means I'm not a victim. I am power. I am a powerful being. Second, I'm always light and happy. Always happy. Happiness वो चीज नहीं है जो हमें चाहिए. I am always happy. Third, I am fearless. I am fearless. We're surrounded by vibrations of fear.
We have to raise above that. Fearless. So third is I am fearless. Fourth, I don't need anything from anyone. I am a giver. मैं देने वाली आत्मा हूँ. I am a giver. Giver matlab giving respect, giving love, giving understanding, giving empathy. Not like that. मुझे प्यार करो, मुझे respect दो, मुझे पूछो, मुझे appreciate करो. हम चाहिए वाली साइड पर नहीं है. हम देने वाली साइड पर है. जिन्होंने लोगों को empower करना है वो चाहिए वाली साइड पर हो ही नहीं सकते. तो चाहिए 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 नहीं हो सकता. देने वाली साइड पर है. I am a giver. दिया जलाते हैं ना, दिया जलाना शुभ होता है, which means the power to give. Diya, the power to give. As long as the power to give is here, जीवन हमेशा शुभ होगा. So I am a giver. I don't need anything from anyone. I accept people as they are, and people accept me as I am. This is an affirmation for relationships. It does not mean we don't tell people what to do, what not to do. It's just that people cannot affect my mind. I accept people as they are, and people accept me as I am. What are we changing? We're changing that deep rooted programming which said expectation is normal. अब वो कोडिंग को चेंज करना है. दिस इज एन इनर कोडिंग. हम रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं अपनी थॉट प्रोसेस की. तो वो एक्सपेक्टेशन इज नॉर्मल की जो कोडिंग हुई हुई थी उस पर रीकोडिंग करना है. आई एक्सेप्ट पीपल एज दे आर. पीपल एक्सेप्ट मी एज आई एम. माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी. माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी एंड विल ऑलवेज बी. अपने शरीर का ना शुक्रिया कीजिए. सिर्फ कोविड टाइम पे नहीं, वैसे भी हम अपने शरीर में कभी कभी कुछ ना कुछ टोकते रहते हैं उसको. मोटी ज्यादा हो गई, अब पतली ज्यादा हो गई, कभी बाल ग्रे हो रहे हैं, कभी बाल गिर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है. मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर ढूंढते रहते हैं कि ये परफेक्ट नहीं है. क्यों परफेक्ट नहीं है ये शरीर? क्योंकि किसी और के कंपैरिजन में ये परफेक्ट नहीं है. If we had no one to compare with, we would be very happy and contented with our body. But we're always comparing it with someone else. And since the time we have social media, there's too much comparison has gone to another level altogether. अपने शरीर का शुक्रिया कीजिए रोज. Accept your body first. Accepting your body. Take care of it being healthy. But लेकिन उसमें नुक्स नहीं निकालते रहना. That is rejection. अगर कोई हमारे अंदर सारा दिन गलतियां निकालते रहे, हर थोड़ी देर बाद शीशे में देखे, ओ हो अभी भी ऐसा है, अभी भी, that is rejection. Don't reject your body because the first relationship we have is with the body. इस शरीर के थ्रू हमने सब काम करने हैं. This body and I have to be in harmony. For that, I have to accept my body. Don't keep trying to change it every time. Perfection is in health, not perfection in looks. Perfection अगर चाहिए भी तो सोच में perfection चाहिए. सोच में perfection चाहिए. जितना मन सुंदर होता जाएगा, आपकी ब्यूटी आपके शरीर पे, आपके चेहरे पे दिखाई देगी. It is not in the perfect shapes of the nose and the eyes and the ears. It is in the perfect vibration that has to radiate from the face. So accept your body as it is. Taking care of health is a different thing, but always trying to change something and grumbling about it gives rejection energy to the body. And अगर हम बहुत समय से body की rejection energy देते रहते हैं, फिर हमारे शरीर और हमारा रिश्ता थोड़ा सा अच्छा वाला नहीं बनता. जैसे हम किसी को रिजेक्ट करते रहे तो वो हमारे से थोड़ा सा नाराज और दूर होने लग जाता है. सो डोंट रिजेक्ट. एक्सेप्ट योर बॉडी, लव योर बॉडी. उसको रोज बोलिए आई लव यू. रोज बोलिए आई लव यू. उसको प्यार कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट उसको शुक्रिया कीजिए. 24 घंटे ये हमारा काम करता है ये शरीर, उसका शुक्रिया कितना करना चाहिए. सो माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी एंड विल ऑलवेज बी. दिस इज गोइंग टू रिमूव द थॉट अगर मुझे कोविड हो गया तो. So that coding has to go. It will get replaced with my body is perfect, healthy, and will always be. Create a thought for your family. My family is perfect and healthy, safe and secure, and will always be. There's only a choice. हम ये भी सोचते हैं अगर ये हुआ, वो तो ऑफिस जाते हैं, वो बच्चा भी मानता नहीं है, बाहर चला जाता है.
taking care, but not creating the wrong thought. My family is safe and secure, perfect and healthy, and will always be. एक विजुअल अपने सामने लेकर आइए कि परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच है आपके चारों तरफ. God's divine light energy, a protection shield around me. Create this visual many times in a day that I am protected by the highest vibrational energy. इसके अंदर कभी भी कोई लो वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं घुस सकती है. I am protected by the highest vibrational energy. Then you can put an affirmation for your work. Work. अभी तो 1.5 साल होने वाला है. We've been saying work, business, economy, हिली हुई है, disturbing है. You can say, put an affirmation for your work. Think what you want should happen and put an affirmation for your work that you have to create. The language of the affirmation is, it has already happened. It has already happened. Success is certain for me. Success is certain for me. I have abundance, wealth, time, and energy. इन तीनों चीजों के लिए हम बोलते रहते हैं, I have less. I don't have enough time. I don't have enough wealth. It's always short. चाहे कितनी भी आ जाए. And I don't have enough energy to do what I have to do. So I have abundance, wealth, time, and energy. I have more than I need. 10, 12 affirmations. 8-10 ही बने actually. And if you feel like it, you can create an affirmation for the world. That God's power and blessings protects the entire planet. The world is safe. So we create about 10 affirmations and we start our morning with that. So the first thing when we wake up, we don't look at the phone. That's a habit which needs to be changed if I want to shift from being a victim to being a powerful soul. Because if I consume the world onto my mind in the first thought of my morning, just switch on the phone और उसको ऐसे ऐसे scroll कर लिया, I have consumed the content and the emotion of the world onto my mind. It will go deep into the subconscious. The first hour of the morning and the last hour before you go to sleep are extremely crucial. First hour and last hour, deep impact on emotional health. So do not consume content, social media handles, news channels, TV serials, OTT platforms, or any movie should not be at the last hour of the night and definitely not in the first hour of the morning. Now, we may not be watching any of these, but we may be consuming work communication. So work emails, work messages, flow emails, flow messages, not in the first hour of the morning or the last hour before we go to sleep. These two times are not for anything of the outside world, because the first hour will decide my day, the last hour will decide my quality of sleep, and my quality of sleep will decide my quality of day, and it's going to go into a cycle. So the first hour of the morning, begin first thing when you wake up, open your eyes, say your affirmations. Mind is absolutely calm, absorption power is highest, and you have sown the seed. I'm a powerful soul. I'm always happy. I'm fearless. I accept people. I'm a giver. My body is perfect, healthy. I'm protected by the divine energy. My family is safe. My work is perfect. Success is certain for me. I have abundance. Up early morning, we should repeat this at least 5-10 times. And you can add any other affirmation you want to it. These are just certain basic affirmations. Suppose you want to forgive somebody, you want to release some past, you can put an affirmation. I forgive, I forget, I let go. It's a past, it's over. Create a set of affirmations and don't keep changing them every day. Use the same set of affirmation for a couple of months till they become your reality. It's the same thing. We're going to repeat the same thing because it's a coding that has to happen here. So first, our first thing, let's sit in bed even before we start waking up to freshen up. Say those affirmations because ek baar utke, then the mind starts talking inside. So say it as the first thing when we wake up. Then morning hours should be used for meditation, introspection, spiritual study. What is spiritual study?
Why are we creating low vibrational emotion? The reason is we are consuming low vibrational content. What we watch, read, listen is who we become. This is very important. All of us take care of our physical diet. We need to take care of our emotional diet too. An emotional diet is what we watch, what we read, what we listen. Why 30 years back we were not talking depression, we were not talking anxiety, we were not talking stress? Because we did not have phones, we did not have internet, we did not have social media, we did not have even TV to begin with. So automatically emotional diet was healthy, mind was fine. Suddenly we've got abundance of all this content. So take care. What I watch, what I read, what I listen is who I become. If I am going to watch, read, listen, ego, lust, greed, jealousy, violence, comparison, competition, stress, anger, and the list, I will become that. So, first of all, restrict. Be very strict. The way you are strict with your physical diet, even more than that, you need to be strict about the emotional diet, even more than that, because it's the mind which influences the physical health also. We know people who eat right, who exercise right, never smoke, never drink, and yet something happens to them. And it's the question is, why did this happen? Doctor will say too much stress, too much stress. So we need to take care of our emotional health. So please take care of what you are consuming from media platforms. Someone would have said to you last Sunday, you know what, I watched that entire series this Sunday. It was absolutely great. And you immediately put it on your to-do list. Okay, next Sunday, I also have to watch it. Because next time we meet, if I am the only one who's not watched it, I feel very left out. So I watch it because everybody is watching it. Please remember, just because everybody is doing something, it's not necessary. It's the right thing to do. Let me be the one who creates a change. Maybe another one will change, inspired by the vibration of my change. So let's do what is healthy for me. Restricting content consumption will empower your children to be able to restrict it. Otherwise, you will not have the power to say anything to them. And, anyways, saying will not change them. Your vibration will change them because you have created that change. At least 20 to 30 minutes in the morning, a healthy emotional diet. Because how much ever we do, there is something or the other we will consume during the day. So at least 30 minutes of a healthy emotional diet. This is where it could be spiritual study, it could be self-improvement book, it could be a video, it could be an audio, anything. Positive diet first thing in the morning for this mind. This is our Subha ka nashta for the mind. Then, of course, the exercise, the yoga, pranayam. So at least 45 minutes self-care, taking care of this seed. Throughout the day, taking care that I am not depleting my energy and I'm not being a victim to situations and people. I have prepared myself in the morning, and during the day, I just play my part according to what I prepare. I respond. I don't react to situations and people. That will conserve energy. Now, evening time, very important. At least 2 hours before going to sleep, we should disconnect from work. That is another very big reason why we are very high on depression and anxiety, because our mind is always at work since the time we have technology. Again, when we didn't have phones, जब हम घर आते थे, तो हम घर पे होते थे. So the mind could not go to work because there was no way of going to work. But now, imagine coming home by 6, 7 in the evening and then going to work tomorrow morning at 9 o'clock, and the mind had no way to know anything about work. So by default, the human mind got 15 hours every day without work. कहाँ से stress होता? कैसे depression होगा? हो ही नहीं सकता. When was the last time your mind had 15 hours without knowing anything about work? That's the reason. So at least 2 hours before you go to sleep, you should disconnect from work so that when you go to sleep, your mind is at ease. But just before sleeping, also email, message, then only the body sleeps.
The mind ko, you have given them an email to think about just before going to sleep. And in case you wake up at 2 or 3 in the morning, fir aap check kar lete ho, any more email, then for 3 to 6 also you have given your mind another email to think about. You want to check how good we are with our sleep, you should check on the flight the next time. People can go to sleep at any time of the day nowadays. Anytime. They're having a good night's sleep, coming on the flight at 9 o'clock in the morning, they are dozing off. 10 o'clock in the morning, people are dozing off. How can anybody sleep at 10 o'clock in the morning? Only those who are sleep deprived. And they are those people who were working till they went to sleep. So their minds did not sleep well on a daily basis. This is a very important lifestyle habit. One person in the family has to begin, then the other people will also start to change. 1 hour, 2 hours, disconnect from work. 1 hour, disconnect from media, social media. No watching news debates lasting in the night before going to sleep. You can't put all that in the night. दिन में देख सकते हैं. दिन में देखिए अगर देखना है तो रात को नहीं देख सकते. Because then all that's going to go in just before I sleep deep into the subconscious. Last hour should be a very soothing, peaceful time. Do whatever you like to do, but it should have a soothing effect. Sitting with family, chatting with children, listening to music, reading a book, writing a letter, anything. But it has to have a soothing effect on the mind, not a stimulating effect on the mind. So it has to start slowing down the mind before we go to sleep. And just before we sleep, 10 minutes, 15 minutes, again consuming a positive diet just before we go to sleep, 15 minutes. And settle your day. Anything happened during the day, sort it out here. Forgive people, ask for forgiveness, all in the mind. But sort it out. Sort out your karmic accounts before you go to sleep. Then you'll never remember them for 10 years and 20 years. We say, oh, I cannot forget that thing because we went to sleep without settling that thing. So settle it. That's why people write journals, people write letters. It's a way of bringing out all our negative emotions before we go to sleep. It's a very, very healthy habit, but write it in a positive manner. Don't say they did this. Say, I understand them, I forgive them. Topic is over. Om Shanti. So that's settling the mind. You close your eyes and say your affirmations as the last thing before you sleep. Just keep saying your affirmations in your mind and you will fall off to sleep with the last highest vibrational thought which you want should manifest and become your destiny. So 6-7 hours while you sleep, those high vibrational powerful thoughts are going on in your subconscious mind. It's a very powerful time. Last thought before you sleep and first thought when you wake up, and in the day, whenever you remember, every 1 or 2 hours, you should repeat it for 10 seconds. Just 10 seconds it takes to repeat it. And the best time to do it is just before your meal. Energize your food with your vibration. Like we pray for the food, energize your food with your vibration. Water has vibrations. You can energize your glass of water with your vibrations. Your cup of tea or coffee, if you drink that, should not be drinking anything else apart from that. Definitely not. It's low vibrational. And never have phones and TVs while you're having your meals. It has a very depleting effect on the mind and the body. Meal has to be in silence, happy conversations, not watching media or talking work on the phone or discussing problems over the dining table or business lunches. Very unhealthy to have business lunches or business dinners. Have lunch, have dinner, then business, but not lunch, dinner, and business. Don't let the food absorb business and problems and crisis. It's the easiest way to deplete emotional energy. Jaisa an, vaisa man. An has to be high vibrational food. Experiment with a sattvic diet. I'm sure everyone's been doing that during COVID, a vegetarian diet. Go online, just search video of a slaughterhouse. What's the energy? Is that the energy we're going to put into our system? Pain, anxiety, fear, hatred, anger, violence, death. How can someone's death be our health? Not possible. It can be proteins, but it can't be health.
And now even doctors say it, because earlier we used to say doctor ne bola hai non-veg healthy hota hai. Now even they have changed and they say diabetes, cardiac issues, and certain cancers are high in a non-vegetarian diet. So let's experiment with the vegetarian diet. Healthy for mind, healthy for body, for both. And when you're cooking or someone is cooking for you, there should be high vibrational energy in the kitchen. If someone is not in a healthy frame of mind and they are cooking for you, that is risky for the entire family. And you will see the result of it in your family. अगर कोई परेशान है, हताश है, उदास है और वो खाना बना रहा है, आपके घर में ऐसे परेशान मन चलने शुरू हो जाएंगे. Because that is the easiest way to radiate vibrations. So please take care. Best thing is to cook for your family. But in case we don't have time, at least go into the kitchen for 30 minutes. In case we don't even have that time, just take care that who is cooking for you is cooking in a very good state of mind. उनके मन पे कोई चिंता और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो नाराज नहीं होने चाहिए, वो हिंदी फिल्म के गाने सुनते हुए पिक्चर खाना नहीं बनाना चाहिए, वो फोन पे गॉसिप करते हुए खाना नहीं बनाना चाहिए. Make that mandatory for them if you want everyone's mind in your house to be calm and relationships to be beautiful. We have seen houses where only when they changed the person who was cooking, the staff, relationships started changing at home. Because the person who was cooking very agitated, irritated, people also started becoming like that, started snapping at each other for no rhyme or reason. It's not the person's fault. They didn't do anything wrong. They were just not very happy people in their mind, and they were cooking in that unhappy state. Uska asar, jaisa an vaisa man. So make the kitchen like a high vibration, like a temple, like a gurdwara, jahan prasad banta hai. Apne ghar ko vaisa bana dijiye. Let high vibrational songs play in the kitchen. Bhajan, spiritual songs, prayers, mantra, whatever you like. Play it in the kitchen the whole day. Food and water will get energized. And then when the food is there before the family, 10-second pause, say your affirmation, no phone, TV, and eat. Very, very simple steps to have good, high power emotional health. And when you are powerful here, you have to do nothing to empower people because you are radiating at a high vibrational energy. It's going to go from you to everyone. वो automatically hota jayega. And all this does not require much time. It only requires prioritizing the seed. The tree is taken care of. And if you would like to learn the meditation, then in Kanpur, there are centers, the Raj Yoga meditation centers, where you can go and learn the meditation after the centers have opened. Someone has written, I like to listen Hindi film songs. Think about it, what energy you would like to give the family. Listen to the songs, but preferably not while cooking. Not while cooking. So think. It's better to have divine songs playing when you are cooking. Zyada time nahi lagta khana banane mein. Take care, because very simple things, results multifold. Results are multifold. Thank you so much. Om Shanti. Thank you so much, Sister Shivani ji. You are just like a river of positivity. So enlightening, so enriching, and that calmness is just coming hearing you. We have some questions from our members. With your permission, we could start asking that. The first question is by Nalini Sanwal. प्रणाम सिस्टर शिवानी. एक सवाल है जो दिमाग में घूमता है और परेशान करता है. I want you to answer that for me. When all in a family has deep-rooted religious orientation, and then your child says, I'm an atheist, I don't believe in your ways of puja and God. How do we handle this child who is now an adult? Why does this happen when the family environment is so conducive to religious activities and faith? Every soul carries different sanskars. They are a child in your family now, but it's a soul on a journey. They have come from a past, and then they entered the womb of your mother. So there they are in your womb.
You are very religious, your spouse is very religious, your family is very religious, they like to do all the puja and the rituals every day. But this soul has already entered the womb with a very, very deep belief that they do not believe in all these things. We have to be able to respect the other person's sanskar. हम उनको force नहीं कर सकते हैं. They have come with that sanskar. Now, who are we to say that you are wrong? That is rejection. That is rejection. Accept people. Acceptance means, yes, I understand this soul has come with that sanskar. I will continue to pray. I will continue to do my ritual. And I know that all my prayers and everything that I'm doing, all the vibrations are reaching him. Why does he need to do it separately? मैं उनके लिए भी कर देती हूँ. क्या प्रॉब्लम है? आप उनके लिए नहीं कर सकते हो, आप तो उनके लिए भी कर सकते हो. आप उनके लिए कर दो, आपकी वाइब्रेशंस उन तक चली जाएंगी. जो प्रेयर से मिलना था वो वाया वाया आपके उनको मिल जाएगा. लेकिन if we keep rejecting each other and you say this is not right, you should not do it, I'm sure he's going to say what you are doing is a sheer waste of time. पता नहीं क्या बैठे बैठे करते रहते हो रोज सुबह सुबह. So then there is a lot of rejection energy that starts happening. When one rejects the other, we will also get rejection in exchange. Religion was meant to make us more calm, peaceful, united, and accepting. We cannot be rejecting each other in the name of religion. It is the same like people are fighting wars in the name of religion. लड़ रहे हैं ना धर्म के नाम पे. किसी धर्म ने सिखाया था क्या ये करना? तो धर्म के नाम पे रिजेक्शन और लड़ाई नहीं. वो करें तो बहुत अच्छे, नहीं करें तो भी बहुत अच्छे. हम करते रहेंगे और हमारी वाइब्रेशंस उन तक पहुंचती रहेंगी. हमें उनको सिर्फ सिखाना है कि सही कर्म करना है, सही कर्म करना है, सही वैल्यूज यूज करनी है. Whether they do it on their own or whether they do it using the power of a ritual or religion, that is their choice. It's a simple thing like you have to wake up in the morning. Whether you wake up on your own or whether you put a morning alarm, that is your choice. अब जो अपने आप नहीं उठ सकते उनको मॉर्निंग अलार्म लगाना पड़ता है. तो हमें ये सब रिचुअल्स पता है क्यों चाहिए होते हैं? So that we can be calm, we can be peaceful. हो सकता है he is able to do it without those rituals. Why should we force them? क्यों हम force करेंगे? हम राय दे सकते हैं लेकिन हम force नहीं कर सकते. And हम reject तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते. Don't ever create a thought in your mind which says ये गलत कर रहा है, ये तो पूजा नहीं कर रहा, पता नहीं भगवान जी इसको कोई पाप पाप ना दे दे. ऐसी वाली थॉट नहीं कभी क्रिएट करना उसके लिए. Then that is too much of a fear and rejection. Accept the soul will accept you, and religion in its true form will be in the family, because religion was about love, understanding, and acceptance. Method can be different. धर्म आत्मा का होता है, ये सब मेथड होते हैं उस धर्म तक पहुंचने के. अलग अलग मेथड होता है लेकिन पहुंचना तो यहाँ है. The religion of the soul. So don't worry about your child. चिंता नहीं करना इस बात के लिए. हमें जब तकलीफ होती है या वी आर गोइंग थ्रू समथिंग चैलेंज तो हम तुरंत हमारे मंत्र हमें आ जाता है एंड वी रिसाइट इट एंड ऑल. तो लगता है इन बच्चों को क्लिंग करने के लिए फिर क्या है, ऐसा मन में आता है. That they will have to choose. So when they are going through some ups and downs, you will have to tell them कि अगर आपको ये नहीं करना तो आपको कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा. It's like physical stamina. कोई जिम जाता है, कोई वॉक करता है, कोई योगा करता है, कोई everybody does different things, right? लेकिन इंटेंशन तो एक ही है ना, physical health. Similarly, spiritual health. कोई मेडिटेशन करता है, कोई प्रे करता है, कोई रिचुअल करता है, कोई everyone can choose their own method. So you can ask them that going through present times, you have to remain strong. आप method अपना कोई भी choose करो. I have this method to offer to you. If you don't want to choose this, you choose another one. But don't get up and down in situations. So ask them to build up their emotional stamina by the method which they are comfortable in. But we can never force someone to adopt any system. That's true. Forcefully कभी नहीं. They are just out of the cocoon. So ये भी नहीं समझ में आता है कि what is that, you know, what is the thing that they hold on to or they can go hold on to. They will learn on their journey. No? They've just come out of the cocoon seeking it. Thank you so much. Most important is let's be an embodiment of our religion. Let it not just be a ritual, be an embodiment of that religion, which means follow everything that the religion says. They should see that in practicality in our life. That is the biggest inspiration.
Thank you. Thank you so much. Okay. Pranam. Meenu, please take on the next question. Ritu Bhabhi? Neetu, I think, no? Who has to take on a question? Should I can't see her, that's why I'm asking you. Okay. No, I'm here. Okay, Neetu, you can start, please. Yeah. Pranam Shivani ji. I wanted to ask you, there are times, especially in times of despondency, that we feel, why me? मैंने तो कभी किसी का बुरा सोचा नहीं, करा नहीं. There are times when you feel like that. And not to say कि times of elation में हम नहीं याद करते हैं, but more in times of despondency. And जब भी आंसर इसका सोचते हैं तो मिलता है कि संचित कर्म है और कर्मों की गति है और ये गति है. मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये कर्मों की गति फिर उसी जीवन में क्यों नहीं पूरी होती है. कई बार ये क्वेश्चन नहीं आ पाता समझ कि कर्मों की गति उसी जीवन में क्यों ना पूरी हो. कर्म किसने किया? किसने किया कर्म? आप बताइए, कर्म किसने किया? नहीं, यही तो मैं ना, आप सिर्फ सोचो एक मिनट. जो सुना है वो रहने देते. लेट्स लिसन. कर्म किसने किया? सपोज आज अभी आपने मुझे गुस्सा किया, तो कर्म किसने किया? उस बॉडी ने. बॉडी गुस्सा करती है. हमने. तो हम और बॉडी तो डिफरेंट है ना. बॉडी ने नहीं गुस्सा किया, आपने गुस्सा किया. You created a thought, you did not like something I said, then you sent an instruction to the brain and then the brain spoke it out through the mouth. तो आपने गुस्सा किया, शरीर ने नहीं गुस्सा किया है. So like this dress which you are wearing, this body is also a dress which we are wearing. ये सिर्फ एक ड्रेस है जो हमने पहनी हुई है. अब इस ड्रेस को पहन के हम बहुत सारे कर्म करते हैं. मेजॉरिटी कर्म हमारे बहुत अच्छे वाले कर्म हैं. कुछ हम गलतियां कर देते हैं और फिर एक क्षण आता है हम शरीर छोड़ते हैं तो ड्रेस पीछे रह जाती है. ड्रेस पीछे रह जाती है. So it's like you do a karam today in this white dress you're wearing. Tomorrow you would be wearing a blue dress. But आपने आज जो कर्म किया होगा उसका consequence कल आएगा ना. कल आएगा ना. You cannot say मैंने ड्रेस चेंज कर ली. So ड्रेस का कोई कर्म से कनेक्शन नहीं है, आपका कनेक्शन है. सिमिलरली ये भी एक ड्रेस है, ये भी एक ड्रेस है. जैसे ही आप इसको छोड़ते ड्रेस पीछे रह जाती है, आप आगे चले जाते हैं और आप अपने साथ क्या लेकर जाते हैं? अपने कर्म और संस्कार. माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं. 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है. जैसे ही बच्चा पैदा होता है पंडित जी जन्म पत्री दे देते हैं. किस बेसिस पे जन्म पत्री बन गई? ऑन द कर्म एंड संस्कार दैट द सोल हैज ब्रॉट. सेम पेरेंट के 2 बच्चे पैदा हो सकते हैं, जुड़वा बच्चे पैदा हो सकते हैं, सेम टाइम पे पैदा होते हैं, लेकिन दोनों की डेस्टिनी बिल्कुल डिफरेंट होती है. Karam and sanskar which they have got. So it's not about life. It is that is the journey of the soul. वो एक ड्रेस पहनते हैं, 100 साल के बाद वो ड्रेस छोड़ते हैं, दूसरी पहनते हैं. जैसे हम ये ड्रेस रोज बदलते हैं, हम ये वाली ड्रेस 70, 80, 100 साल बाद बदलते हैं. कर्म तो हम कर रहे हैं. ना ये ड्रेस कर रही है, ना ये ड्रेस कर रही है, हम कर रहे हैं. So that journey continues. So शिवानी जी, कई बार ये अगर इस जन्म में लगता है कि ये सपोज इट्स अ मिसहैप, इट्स एनीथिंग, तो ये प्रश्न आना तो स्वाभाविक है कि ऐसा क्यों हुआ. ये मेरे कर्मों का हिसाब किताब. और अगली बार वो हिसाब किताब ठीक करने के लिए आप इस जन्म में कोशिश करें कि आप अच्छे कर्म, अच्छे थॉट्स. इवन जब वो वाला हिसाब किताब सामने आता है, आपको बहुत सही स्टेट ऑफ माइंड से उस हिसाब किताब को चुकता करना है. बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ कर्म. दैट इज ऑल्सो अ कर्म. एंड फिर ऑफ कोर्स बाकी सारे कर्म. तो जितना हमारे कर्म अच्छे होंगे, श्रेष्ठ होंगे, तो इट्स लाइक योर बैलेंस शीट ऑफ योर बिजनेस. सारी ट्रांजैक्शंस अच्छी वाली होनी चाहिए. पता ही नहीं होता किस दिन 31 मार्च आ जाता है. अभी कोविड देखो, वो पता थोड़ी था, अचानक हो ना, अचानक हो जाता है. सो टाइम नहीं मिलता बैलेंस शीट को ठीक करने के लिए. सपोज हम हॉस्पिटल जस्ट गए थे कि थोड़ी सी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, वहां कॉम्प्लिकेटेड होता गया, सीधा आईसीयू, सीधा वेंटिलेटर. सोल हैज लेफ्ट. सोल डज नॉट गेट टाइम कि मैं अपना ठीक कर लूं, किसी को क्षमा कर दूं, किसी से क्षमा मांग लूं. ये बात, वी डोंट गेट द टाइम.
So we have to live our life that way. कि अचानक अभी जाना पड़े तो my all karmic matters are sorted. कुछ पेंडिंग नहीं रखना. So which means एक यही ही संचित कर्म का ही explanation है to why explanation नहीं है, ये सच है. आप सारा दिन देखिए अपने चारों तरफ, ये सच है. हर बच्चा अपना अलग अलग भाग्य लेकर आता है. नहीं तो everybody should come with a clean slate, ना? People don't come with a clean slate. Their sanskars are different, their karam is different, and their destiny is different. But even if I carry some karam into the next life, lot depends on my present karam in that next life also. So it's like अगर मेरा ये 31st March loss पे था, तो मेरा 1st April loss पे start होगा. So हमारी जन्म पत्री में आ सकता है ये मुश्किल. You know, there are a lot of things that are मुश्किल in the जन्म पत्री. They are based on my 1st April, which means the day I was born. But this year I could do business in a completely different way. And so वो जो loss था, I can take it to a profit. And some people take a profit to a loss, depending on what karam we are doing in this dress now. So the current financial year, how I'm going to take my business forward. So it's like one financial year is every lifetime. So all the transactions, and one day is your 31st March. And that closing balance sheet is the next day's opening balance sheet. So that is your destiny chart in your next lifetime. Now the next financial year. बस ऐसे ही चलता रहेगा. Thank you so much. You've been wonderful. Thank you. I think let's take the last question. Ritu Bhabhi. Yeah. Thank you, Neetu. Om Shanti, respected Sister Shivani ji. We are indeed blessed to have heard you today and been guided by you. My question is, in our journey to discover our true self and to free ourselves from the person we have conditioned ourselves into becoming, we are guided always to just remain in the present, devoid of any past regret or guilt or fear of the future, fear of illness, fear of dying, fear of losing our loved ones. How can we overcome these oscillating states, between past, then trying to remain in the present, and then, into the future, and remain just in full trust and faith in our Creator? जितना हमने जो lifestyle आज discuss किया ना, it's all about taking care of the mind. If I don't take care here, I become weak. And then most of the time I'm living either in the past or in the future. We are very rarely in the present. And we have a lot to think about the past, lot to think about the future. The more you will energize yourself, you will be very contented in the present. And then it will become very easy. तो इसको forcefully नहीं कर सकते आप. You can't tell your mind, don't think that, don't. ऐसे नहीं होता. It can't happen like that. We just have to energize the mind on the daily basis. Automatically उसका stamina बढ़ता जाएगा. जैसे stamina, it's like, suppose you get breathless after climbing steps. You can't tell yourself, no, I will not get breathless today. ऐसा नहीं हो सकता. You will just take care of your diet, your exercise. Next month, you will not get breathless because आपने अपना stamina build up कर दिया. So let's get building up this stamina. That's that daily meditation, daily study, sattvic diet, affirmations, sleeping well, working right, taking care of our karmas every day. आपकी emotional health build up होने लगेगी. Automatically you will see that your mind is not going too much into the past and the future now. वो अपने आप byproduct है उसका. Also, if the circumstances are such that, takes you into, like with the times today, there's... Circumstances cannot take you anywhere. That's what we said. Circumstances will not decide your mind. It's all... You will. You are the master of the situation, not the situation to you. जितने हम मन से कमजोर होते हैं ना, उतना सिचुएशन हम पे हावी होती है. और जितना हम इसको एनर्जाइज करेंगे, आप सिचुएशन पर हावी होंगे. It's all about who is stronger. So it's only about that. तो थोड़ा आप एक महीना भी करेंगे, you will find yourself stronger in the same situations. In the same situations in which you did not find yourself stronger. It's like physical. आपको bend करना है. आप आज नहीं bend कर सकते, लेकिन आप रोज थोड़ा ऐसा करेंगे. 15 दिन बाद आप bend कर लेंगे. Same with this. आप daily करेंगे, suddenly after 15 days you will find, अच्छा आज मुझे बुरा नहीं लगा ये वाली बात. कैसे बुरी नहीं लगी? हाँ, I have been working on myself for 15 days. So it's a stamina that gets built up naturally.
हमें लेकिन उसको डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है. It has to be a daily lifestyle. So at least that's one lesson from COVID, that we have to take care of the seed. We have to. Thank you so much. Thank you so much. Meenu, you can take. Sister, we have so many questions coming up, but just seeing the time, shall we? Questions का तो कोई end नहीं होता है. But ये सारे questions के answers खुद हमें मिलते जाएंगे if we start doing it. We have to start energizing आपके साथ. It's like all these questions are about the tree. Tree के कितने भी हम questions answer कर ले, we won't get the result. We just have to nourish the seed. अपने आप tree सुंदर होता जाएगा. अपने आप. It cannot happen logically. It has to happen the practical way, that you nourish the seed, the tree will be healthy. आप एक एक फल को पानी दें, अभी एक फल को देंगे, थोड़ी देर बाद वो फल सूख जाएगा, दूसरे फल को पानी देंगे. Nourish the seed. Nourish the seed. That's where the secret of a healthy tree lies. So करने देते हैं इतना, फिर उसके बाद अगली बार अगले questions देखेंगे. One cannot have a positive life with a negative mind. So turn all the negative thoughts into positive as much as you can. Here's to new beginnings, new hope, and new growth. I would now like to invite a chairperson, Mrs. Kanika Ved, to present the green certificate. We at Fiki Flow have planted a tree in your name, ma'am, in association with Trees for Tigers. Thank you. Thank you so much. You can track your tree as it grows with the unique identification number given on the green certificate. Thank This you. is our way of contributing towards cleaner and greener tomorrow. Sister, we are really going to cherish this experience and carry these vibrations along with us for a lifetime. And ये बात आज समझ में आ गई, संकल्प से ही सिद्धि होगी. Thank you, sister, for aligning me to take this chapter forward. I would like to call upon my senior vice chair, Pooja Gupta, to give a vote of thanks, please. First of all, I would like to congratulate my friend Kanika Ved for taking up as a chairperson for the year 21-22. What a wonderful way to start the new tenure. And so much of positivity and blessing of Sister Shivani. We are all blessed today and hope we will be doing this year a lot of miraculous work. Thank you so much, Sister Shivani, for your grateful time and much needed enlightenment and enriching guidance, which will take us a long way in helping us in reinventing our inner self in today's scenario. Om Shanti, Om Shanti. I thank all the GB members and past chairs for joining in and encouraging us in today's session. I would like to extend our heartiest gratitude to our annual sponsors, Eris Life Sciences and Premanjali Foundation for their generosity in these different times. I would even like to thank our event chair, Meenu Jhunjhunwala and Shruti Jhunjhunwala for an amazing show. Without them, it would not have been possible. I would like to thank members, viewers, and media for their support, continuous support. All of you, please stay at home, stay safe, and have a great time with your family. And think positive, like Sister Shivani said. Om Shanti. Om Shanti, sister.